सी इन दिस वीडियो हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज़ द मेथडोलॉजी दैट MN श्रीनिवास ही फॉलोज इन हिज वर्क्स। तो MN श्रीनिवास क्या है, बेसिकली उनके वर्क्स में आपको स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म की मेथडोलॉजी देखने को मिलेगी। नाउ श्रीनिवास बेसिकली ही बिलोंग टू द प्रिंसली स्टेट ऑफ मैसूर। मैसूर में उनका जन्म हुआ और अगर आप उनके बायोग्राफी देखोगे और उनका स्पेसिफिकली इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड देखोगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि MN श्रीनिवास ही वेंट टू बॉम्बे यूनिवर्सिटी। उन्होंने वहाँ से MA किया बॉम्बे यूनिवर्सिटी से। वहाँ पे उनके जो गुरु थे और वहाँ पे जो टीचर थे ही वाज GS घुरे। GS घुरे ही एडवाइज्ड श्रीनिवास टू गो टू हिज नेटिव प्लेस टू कंडक्ट द फील्ड स्टडीज़। आपको ये देखने को मिलेगा देन श्रीनिवास बिटवीन द ईयर्स ऑफ 1940 टू 1942 ही वेंट टू हिज नेटिव प्लेस, राइट, मैसूर गए और वहाँ पे एक कुर्ग्स हैं। कुर्ग्स इज़ बेसिकली अ माउंटेनियस प्लेस और वहाँ के लोग जो हैं उनको भी कुर्ग्स बोलते हैं, राइट। कुर्ग इज़ अ प्लेस, माउंटेनियस प्लेस। देन ही कंडक्टेड अ फील्ड स्टडीज़ 1940 से 42 के बीच में, और दैट फील्ड स्टडीज़ और वो जो उनकी थीसिस थी जो उन्होंने MA में दी थी उसको उन्होंने बोला मैरिज एंड फैमिली अमंग द कुग्स। देर आफ्टर श्रीनिवास ही वेंट टू ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ही केम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ AR रेडिक्लिफ ब्राउन। वहाँ पे उन्होंने PhD जब कर रहे थे तो AR रेडिक्लिफ ब्राउन ने उन्हें सजेस्ट, AR रेडिक्लिफ ब्राउन और इवांस प्रिचार्ड, दीज टू स्कॉलर्स दे बिलोंग टू द ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिकल ट्रेडिशंस। नाउ ये दोनों स्कॉलर्स थे जिनके अंडर उन्होंने अपनी PhD की। पहले ही वाज इनिशियली डूइंग हिज PhD अंडर AR रेडिक्लिफ ब्राउन, देन ड्यू टू वेरियस circumstances later Evans Pritchard became his PhD guide। तो यहाँ पे उन्होंने जो मैरिज और फैमिली जो अर्लियर उन्होंने जो स्टडी की थी, फील्ड स्टडी की थी कुर्ग्स में, उसी को ही उन्होंने क्या है स्ट्रक्चर फंक्शनल एनालिसिस उस पर अप्लाई किया और उसका जो आउटकम था, जो वर्क था, दैट इज रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुर्ग्स ऑफ साउथ इंडिया। इट इज़ अ मेजर PhD thesis of MN Srinivas। This was written in 1944 and it was later published in the form of a book। तो MN Srinivas was inspired by AR रेडिक्लिफ ब्राउन, जहाँ से उन्होंने स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म उठाया, जहाँ से इवंस प्रिचर्ड से इंस्पायर होकर उन्होंने फील्ड स्टडीज अपनी वर्क्स में क्या है अडॉप्ट की, राइट। स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म हमने देखा था कि society is made up of various parts and subparts. These parts are in sync or harmony with each other. There is consensus, order and stability in society. इन parts के बीच में integration है, ठीक है। Now this is structure functionalism। और अगर हम structure और function की बात करते हैं, social structure basically we can say implies rigidity, जहाँ पे rigidity है, right, कि जो inter relationships है among different members of the society within different context, it is shaped by customs, values, norms and regulations of the society. It is shaped by the role expectations, the status role complex. So relationships are stable, patterned, regular relationships or social relations. तो यहाँ पे there is a predictability of human behavior and this is the structure of society. This implies certain rigidity and stability in the society. So each structure has a function to perform. For example, caste perform certain specific functions. Education का structure है which performs the functions of socialization. Family का structure है which performs the functions of socialization. और हमने देखा था Talcott Parson talks about stabilization of adult personalities. So structure functionalism उन्होंने अपने वर्क्स में अपनाया, ठीक है। और आप ये देखने को मिलेगा कि श्रीनिवास talks about close relations between the two fields of sociology and social anthropology। हमने देखा था कि एंथ्रोपोलॉजी वाज बेसिकली इन्वॉल्व इन द स्टडी ऑफ द अदर कल्चर्स, ठीक है। देयर वाज अ डिस्टिंक्शन बिटवीन सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी। सोशियोलॉजी आर्ग्यूड फॉर द स्टडी ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न सोसाइटीज़, कि सोशियोलॉजी का इमर्जेंस हुआ, जो इमर्जेंस हुआ इट इज़ इन द बैकड्रॉप ऑफ मॉडर्निटी। तो जो कॉलोनियल स्कॉलर्स थे उस टाइम पे कॉलोनियलिज्म हो रहा था, दी स्कॉलर्स उन्होंने क्या है
अदर्स को रिकॉग्नाइज किया और क्या कहा कि व्हेन वी स्टडी द अदर सोसाइटीज, right, when we study the small cultures, when we study the tribal societies, the pre-literate societies, that is the task of anthropologies, the tribal communities, the small scale societies, ठीक है, so that is the task of anthropology. तो और how do we study these societies? We go amongst them, we live with them. तो हम पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन करेंगे, वी फॉलो देयर कल्चर, देयर लाइफ प्रैक्टिसेस, वी विल कंप्लीटली इमर्स आवरसेल्व्स इन देयर वर्ल्ड, ठीक है. सो दिस इज पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन. तो यहाँ से जो एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट एक ट्राइब के बीच में रह रहा है, उनके कल्चर लाइफ प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रहा है, इज वियरिंग द सेम ड्रेस, राइट, ईटिंग द सेम फूड, लिविंग अमंगस्ट देम, स्पीकिंग द सेम लैंग्वेज. सो ही इज कंप्लीटली इमर्सिंग हिमसेल्फ इन देयर वर्ल्ड. और वहाँ से ज़्यादा बेटर क्वालिटेटिव इंसाइट आपको मिलता है. योर सोशियोलॉजी विल बी, योर एंथ्रोपोलॉजी विल बी मोर रिच. और श्रीनिवास का मानना ये था कि विलेज भी स्मॉल स्पेस है, लाइक अ ट्राइबल कम्युनिटी इट इज ऑल्सो स्मॉल स्पेस. और ट्राइबल कम्युनिटी में भी क्या है, कंसेंसस और हार्मनी है, ठीक है, बिकॉज इट इज अ स्मॉल दीज आर स्मॉल कम्युनिटीज. और यहाँ पे ट्राइब्स में डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द सोसाइटी टेंड टू मर्ज विद ईच अदर. देयर इज नो डिफरेंशिएशन बिटवीन इकोनॉमी और पॉलिटी, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल इन द मॉडर्न वर्ल्ड इकोनॉमी इज ए सेपरेट इंस्टीट्यूशन. इफ यू वांट टू वर्क यू हैव टू गो टू योर वर्क प्लेस, जबकि ट्राइब सोसाइटीज में ऐसा नहीं है, राइट. यहाँ पे एजुकेशन आपको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में मिलेगी. तो यहाँ पे स्ट्रक्चरेशन और डिफरेंशिएशन हो गया है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटीज आ गई है मॉडर्न सोसाइटीज में. इन द ट्राइबल सोसाइटीज डिफरेंट एस्पेक्ट्स लाइक इकोनॉमी, फैमिली, वर्क, एजुकेशन, दे टेंड टू मर्ज विद ईच अदर. वो होमोजेनस सोसाइटीज थी, राइट. तो वहाँ पे फंक्शनलिज्म एप्लीकेबल था. तो श्रीनिवास टॉक्स अबाउट द सेम थिंग कि विलेज इज द सेम स्पेस. विलेज में भी आपको ये देखने को मिलता है कि दीज आर स्मॉल कंक्रीट बाउंडेड स्पेस. विलेज इज ऑल्सो स्मॉल स्केल कम्युनिटी. वहाँ पे भी क्या है, however there is a structural differentiation but we can still apply the same methodology of participant observation or field studies, right. So thereby he introduced field studies in his work. इसके बाद श्रीनिवास बेसिकली बोलते हैं कि there are two types of perspective to Indian society. One is the book view of Indian society and another is the field view of Indian society. तो जब हम book view की बात करते हैं, so this is a static view of Indian society. This is an Indological view. बुक व्यू मानता है कि इंडियन सोसाइटी इज यूनिक, ठीक है, उसका अलग कल्चर है. तो हम इंडियन सोसाइटी को वेस्टर्न थियोरेटिकल मॉडल्स लाइक मार्क्सिज्म, स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म, इनकी हेल्प से नहीं पढ़ सकते हैं इंडियन सोसाइटी को. तो इंडियन सोसाइटी को पढ़ना है, सिंस इंडियन मैन इज अ डीपली रिलीजियस मैन, हिज एक्शंस आर गाइडेड बाय द text, ancient text, religious scriptures, his philosophy, his mindset is guided by the philosophy that is written down in scriptures. So you study the scriptures and thereby you will be able to understand Indian society, ठीक है. तो इंडोलॉजिस्ट का मानना ये था, this focuses on the textual view of Indian society. MN Srinivas का मानना ये था कि we should adopt the field view, we should go to the field, हम empiricism और ऑब्जर्वेशन करें, इंपेरिकल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें विलेज की, इंडियन सोसाइटी की. वी कलेक्ट फैक्ट्स एंड डेटा, राइट, एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी अंडरस्टैंड इंडियन सोसाइटी. तो MN श्रीनिवास का मानना यह था कि यू गो टू द फील्ड, यू एंगेज इन हार्ड वर्क. दिस इज व्हाट द सोशियोलॉजिस्ट आर रिक्वायर्ड टू डू. By sitting in your armchair, by just reading scriptures of India, you won't be able to get understanding of Indian society. You should put in actual hard work. You go to the field, you collect facts and data, then you apply structural functional analysis on these field studies, and then you come up with the description and analysis of Indian society. This is what Srinivas focused on, or this is what he truly believed in. So this is a field view, whereas Indology is basically a book view. It is an armchair view. ठीक है. This book view, Srinivas argues, it is based on conjectures, speculations, right? Whereas field view, it is based on real facts and data. It is more empirical in nature, right? It is more scientific in nature. So this is the differentiation between book view and the field view. Srinivas का मानना ये था कि book view prescribes ideal, right? Something which is ideal, whereas real is something different, and there is always a gap between ideal and real, and that is why field view is important. So that is why Srinivas adopted field view in his studies. उसके बाद Srinivas basically focused on कि as to why, what are the various features of his structure functional methodology. First one is he argues कि
कि विलेज इज द माइक्रोकॉस्म ऑफ इंडियन सोसाइटी। एक विलेज पूरी की पूरी इंडियन सोसाइटी, उसके कल्चर, उसके ट्रेडिशंस, उसके सोशल स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है। एंड अराउंड 80 to 90% ऑफ इंडिया लिव्स इन इट्स विलेजेस। सो इफ वी वांट टू अंडरस्टैंड इंडियन सोसाइटी, वी हैव टू अंडरस्टैंड इट्स विलेजेस, राइट? सो दिस इज फर्स्ट कंटेंशन। Second, Srinivas argues if you are understanding Indian society, that is good. So what will sociology contribute? What will structural functional analysis contribute? See, basically the field studies were taken up in the period of 1950s to 70s, and MN Srinivas was basically a father of field studies in Indian sociological tradition. He was the first, not the first one, but he was the first one to emphasize the importance of field studies in India. And thereafter, many other sociologists took up field studies in Indian sociological academic space, we can say. तो श्रीनिवास का मानना यही था कि sociology has its own important role to play. Field studies have an important role to play, especially in post independent India. आप 1950s और 60s में देखो, we launched various government programs like community development programs, land reforms programs. Whether these are actually reaching the Indian masses, what are these outcomes of these programs, whether these are fulfilling the real needs, demands and aspirations of the Indian villages. तो ये कैसे पता चलेगा? जब हम field studies करेंगे, so we could definitely give policy inputs to the policy makers or economists which are there in the planning commission, because these economists, they are sitting in their ivory tower, and there is a distance between economists and these policy makers and the real people living in the villages. So basically the economists, they held an top down view of Indian society. So it is the sociologist who will understand Indian village in its entirety, a descriptive analysis or field view of Indian village, and thereby we will be able to understand the real conditions within the villages, the real problems of the villages, the real aspirations of Indian people, of Indian villages, and thereby sociology will provide inputs to the policy, inputs to the planning commission, to the people who are engaged in formulation of plans, to the economists will be providing. Also we will be providing policy feedback, whether this policy is actually contributing to social change or social transformation in the countryside. So we are also doing that. Third, उनका मानना था कि sociology and economy is different. Economy should focus on macro concepts, and sociology basically focuses on micro anthropological insight. Micro in the sense that we are studying the village and we are applying anthropological investigation like field studies and participant observation in order to study the village. So this is what he argued about. Apart from this, Srinivas argues that there is a functional unity within the village. ये उनके स्ट्रक्चर फंक्शनल एनालिसिस में देखने को मिलता है कि in the village there is a caste system, different castes are engaged in different occupations, and there is an exchange of service and skills among these different castes, right? For example, potter supplies pots and utensils, washerman does different things, barber do different things. So there is a reciprocity among these castes, there is an exchange within this caste. So thereby we can say that different components of the village, there is a harmony between them, there is we can say a cohesion between them, there is an organic solidarity between them because they are mutually interdependent on each other, and thereby he argues there is a vertical unity within the village. Different castes which are placed in different layers or stratas of the caste stratification system, they are vertically united because they are dependent on each other. Apart from them, Srinivas argues just like social structure, village has its own structure, like kinship structure, religion structure, caste structure, family structure, political structure, and the interrelationships are guided by we can say these are patterned. For example, caste interrelations between different castes, they are patterned, they are regular, they are stable, they are orderly, because different castes are given different responsibilities. They have different by caste norms are there, caste regulations are there, and thereby the interrelations between different castes they are maintained. For example, a particular caste is going to marry within their caste only. They will follow a particular occupation only. They will accept food only from certain caste only. And higher caste generally cannot accept food from the lower caste.
So these relations between the caste, the commensality between the caste, this is regulated, structured, patterned and maintained, and that is why there is a functional analysis which is possible within the context of village India. So Srinivas basically conducted two field studies. One is we have looked into the religion and society among cooks of South India. Therein he talks about various castes and how there is a solidarity between these different castes in both religious or non-religious context. He also studies Rampura village, right? This study started in 1948. Thereafter, finally this work, after decades of field work, this work was published in 1978 in the field of the remembered village Rampura. ठीक है. So in those studies में ये सारा structure functional analysis आपको देखने को मिलेगा. Finally we can look into the criticisms of MN Srinivas. See, Dalit scholars or sociologists, जो आपके subaltern sociologists like Gail Omwit, उनका मानना यही है कि श्रीनिवास का टॉप डाउन ब्राह्मणिकल व्यू है, इनका एक अपर कास्ट व्यू है. श्रीनिवास जब पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन करते हैं, ही इज नॉट लिविंग अमंग्स द दलित्स. श्रीनिवास रिजाइडेड इन द अपर कास्ट, in the area dominated by the upper caste. He was living with the upper caste. So he was not immersing himself in the world of the Dalits. He is not having empathy for Dalits. He is not understanding the social world of Dalits, or he has not conducted much ethnography work on Dalits, because there was a highway which separated the residences of upper caste from the residences of Dalits. So Srinivas had a limited understanding of Harijan households. So this was one of the critique, that he basically lived amongst the upper caste, and thereby Dalits also looked at suspicion and distrust that MN Srinivas, he belonged to upper caste, he is living amongst them, he is a Brahmin, he is an outsider. So they also had a suspicion and distrust. Plus also the upper caste would not have welcomed that MN Srinivas goes to the lower caste and living among them. सेकेंड, FG बेली और आनंद चक्रवर्ती का मानना है कि आप जब बोलते हो कि डिवीजन ऑफ लेबर कल्चरलॉजिकल है, इट इज गाइडेड बाय कल्चर, there is mutual exchange of service and skills among the different caste. ठीक है, तो this is not consensus, this is not voluntary, rather this is coercive in nature. Lower caste, if given an opportunity, they will leave their occupations. तो जो dominant caste है, through their power, through their assertion, through their dominance, they are forcing the lower caste to do the dirty menial jobs. So this functional unity within the village you are talking about, this consensus within the village you are talking about, this is basically imposed through power and dominance of the upper caste or the dominant caste. And dominant caste beat the lower caste if they try to shake off their symbols of untouchability, if they give up their menial or degrading occupations. They want the lower caste to keep performing these low, dead and menial occupations. Also, Marxist scholars say कि जो MN श्रीनिवास की सोशियोलॉजी है, स्टेटस कोइस्ट सोशियोलॉजी है, MN श्रीनिवास की सोशियोलॉजी फोकसेस ऑन सोशल चेंज. MN श्रीनिवास बोलते हैं कि चेंज इज ग्रेजुअल, राइट, बिकॉज देयर इज अ कंसेंसस इन सोसाइटी. इट इज स्लो, इट इज इवोल्यूशनरी इन नेचर, इट इज नॉट रिवोल्यूशनरी. मार्क्सिस्ट का कहना यही था कि MN श्रीनिवास फेल्स टू analyze the disruptions in Indian society, the large scale revolutionary changes taking place in Indian society. It fails to take into account the anarchy and chaos in the Indian society, right? So it fails to take into account the protest social movements that are going into the Indian society. So he only presents a harmonical or consensual view of Indian society, which is not possible. फिर एक ये भी क्रिटिसिज्म आता है कि जो श्रीनिवास की सोशियोलॉजी है, हिंदू सोशियोलॉजी है, जब वो विलेज पढ़ते हैं, कास्ट पढ़ते हैं, तो ही इज़ नॉट स्टडिंग द अदर माइनॉरिटी, इज़ नॉट स्टडिंग मुस्लिम्स, राइट. सो उनकी हिंदू सोशियोलॉजी है. तो श्रीनिवास तो बोलते ये थे कि जो इंडियन ट्रेडिशंस आर, दीज आर, और बेसिकली विलेज ट्रेडिशंस, कास्ट ट्रेडिशन, दीज आर हिंदू ट्रेडिशंस, राइट. एंड आई एम नॉट लुकिंग इनटू सेक्युलर ट्रेडिशंस. माय फोकस इज ओनली स्टडिंग द विलेज ट्रेडिशंस विच आर एसेंशियली हिंदू ट्रेडिशंस. सो उनको सुजाता पटेल बोलते हैं कि दिस इज बेसिकली हिंदू सोशियोलॉजी. फिर इनका और भी मल्टीपल क्रिटिसिज्म है कि ये जो कंसेंशुअल व्यू प्रेजेंट करते हैं, हमने देखा कि दिस फेल्स टू अप्रिशिएट द डाइवर्सिटी, द कन्फ्लिक्ट विद इन द विलेज. ऑल्सो
श्रीनिवास बोलते हैं कि विलेज इज द माइक्रोकॉस्म ऑफ इंडियन सोसाइटी, विलेज इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडियन सोसाइटी. तो ही फेल्स टू appreciate the diversities, the peculiarities or the differences. One village is different from village. The village of North India is different from village of South India in terms of culture, language, geography, region, food. So you cannot develop macro generalizations on the basis of micro anthropological insights, on the basis of limited study of just one or two villages. You cannot develop an wholesome understanding of the entire Indian society. Right? So this is basically the structure functional methodology of MN Srinivas.